Hello learners, here we are going to discuss the PYQs and concepts of molecular basis of inheritance. So, the first question here is name the enzyme that facilitates opening of DNA helix during transcription. यहाँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है इनमें एंजाइम का नाम बताना है जो कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओपनिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया है डीएनए लाइगेज, सेकंड ऑप्शन डीएनए हेलिकेज है, third is DNA polymerase and fourth is RNA polymerase. So we know that DNA ligase क्या करता है joining of two DNA strand. So first option जो है वो incorrect जाएगा, that is incorrect. DNA helicase क्या करते हैं unwinding of DNA करते हैं, that is also not correct here. DNA polymerase क्या करते हैं extend करते हैं nucleotide chain को, so it's also not correct. The fourth option that is RNA polymerase is a correct option here. Okay, answer 4 होगा. And let's see about RNA polymerase. So it's written here RNA polymerase bind to the promoter and initiate transcription initiation. मतलब RNA polymerase जो है वो promoter से bind करता है and transcription के process को initiate करता है. It is the first process of transcription initiation जहाँ RNA polymerase bind करता है promoter से. It uses nucleotide triphosphate as a substrate and polymerizes in a template-dependent fashion following the rule of complementarity. अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, जैसे कि ये DNA strand है, यहाँ 5 प्राइम and 3 प्राइम OH है, ठीक है, and the lower one is having 3 prime OH and this side 5 prime. We all know that DNA का जो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है किससे 5 prime to 3 prime. तो 3 prime OH जो है वो एक्ट करता है एज अ टेम्पलेट. अब जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम जब डीएनए स्टार्ट होगा ट्रांसक्रिप्ट होना, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करता है एंड द प्रोसेस को इनिशिएट करता है. तो इसी वजह से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर आप एनसीईआरटी बुक में देखो, ये सबटाइटल जो है टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में, यहाँ पे आप लास्ट लाइन सेकेंड लाइन को देखोगे, यहाँ देखो मेंशन्ड है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रोमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन. सो इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हो फॉर फर्दर लर्निंग. Then second question is saying, which of the following statement is correct? Adenine pair with thymine through 2H bond. Okay. Second option is saying through 1H bond. Adenine pair with thymine through 3H bond. And adenine does not pair with thymine. So we know that nucleotides 4 हैं DNA में. Adenine, thymine, cytosine and guanine. अब हम जानते हैं एडेनिन जो है वो थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड के साथ होता, एंड साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ होता. तो फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बोल रहे हैं एडेनिन पेयर विथ थाइमिन थ्रू 2H बॉन्ड, दैट इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर हियर. Now moving to the next question. It is saying if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer and the total number of base pair of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 to the power 9 base pair, then the length of DNA is approximately. तो यहाँ पे दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है जो कि 0.34 नैनोमीटर है. It is mentioned here in the question. और टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स ऑफ डीएनए एक मैमेलियन सेल में कितना होता है ये भी मेंशन है. हमें लेंथ ऑफ डीएनए निकालना है. तो लेंथ ऑफ डीएनए को निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल बेस पेयर मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू बेस पेयर्स, टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर. ठीक है, तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे हमने मेंशन किया है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव बेस पेयर जो कि 0.34 नैनोमीटर है. इसे हम मीटर में लिखेंगे 0.34 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर. टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन डीएनए ऑफ मैमेलियन सेल जो है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर है. अब लेंथ ऑफ डीएनए यहाँ से हम निकालेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके एंड हियर इज द कैलकुलेशन. सो द वैल्यू विल कम 2.2 मीटर. ओके,
तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर जाएगा, आपका आंसर थर्ड होगा, दैट इज 2.2 मीटर. Moving to the next question. Experimental verification of chromosomal theory of inheritance was done by Mendel, Sutton, Boveri, and Morgan. So here the correct option is going to be Morgan. Now the next question is, if a geneticist uses the blind approach for sequencing the whole genome of an organism, followed by assignment of functions to different segments, the methodology adopted by him is called as gene mapping, express sequence type, bioinformatics, and sequence annotation. So the correct option here is sequence annotation. Gene mapping is all about distance between genes. Express sequence tags talk about the RNA containing the information, and bioinformatics related to the Human Genome Project. So here, if you see the NCRT line, just see here the methods involve two major approaches. One approach focus on identifying all the genes that are expressed as RNA. जो सारे RNA की तरह express हो रहे हैं, इन्हें हम express sequence tags में mention कर रहे हैं. And the other took the blind approach of simply sequencing. See the line. It's just same as that is asked in the question. For sequence annotation, it's also from the NCRT line. So just underline it for further learning. And the answer correct will be fourth option. Then moving to the next question. Which of the following occurs due to the presence of autosome linked dominant trait? So, options are myotonic dystrophy, hemophilia, thalassemia, sickle cell anemia. We know that hemophilia and sickle cell anemia जो है X-linked recessive trait disease है. Thalassemia जो है वो autosomal है. And myotonic dystrophy जो है यहाँ पे correct answer होगा, that is an autosomal linked dominant trait. अब देखते हैं myotonic dystrophy क्या होता है. It is an autosomal dominant trait. It is characterized by progressive muscle wasting and muscle weakness. इस डिजीज से क्या होता है कि जो मसल है वो डिजेनरेट करते हैं एंड मसल वीकनेस आता है. अब एनसीईआरटी में ये फिगर 5.14 में जो पेडिग्री एनालिसिस ए है दैट इज टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट फॉर मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी. अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि वन ऑफ द पेरेंट इज अफेक्टेड हियर. इन दिस इट्स सेइंग पेरेंट is affected and as a resultant आप क्या देख रहे हो कि जिनमें भी ये डोमिनेंट ट्रेट गया है वो डिजीज को कैरी कर रहे हैं एंड जनरेशन टू जनरेशन ये फॉरवर्ड हो रहा है. एंड अब जो सेकेंड ऑप्शन है वो क्या देख रहे हैं, ऑटोसोमल रेसेसिव ट्रेट जिसमें पेरेंट्स अनअफेक्टेड है बट जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उनमें डिजीज कैरी आउट हो रहा है. Then moving to the next question. If the length of a DNA molecule is 1.1 meter, what will be the approximate number of base pair? So we know that कि DNA का जो total number of base pair होता है वो 6.6 into 10 to the power 9 base pair है. But यहाँ पे हमें 1.1 meter length के लिए निकालना है. तो we will follow this solution here. DNA molecule is 2.2 meter long and contains 6.6 into 10 to the power 9 base pair. So finding for 1.1 meter long DNA contains 6.6 into 10 to the power 9 by 2.2 and then it is multiplied by 1.1. We will do like this. 6.6 into 10 to the power 9 upon 2.2 into 1.1. So that will give you the answer 3.3 into 10 to the power 9 base pair. And the correct option is going to be fourth option. So that's all for the practice session. I hope you like the session. If you like this session, do share and subscribe and do comment if you want more sessions like this. Thank you.